मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट भी ऑल नो, जब भी हमें किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करना पड़ जाए इन्हीं को बोलते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मीन्स कोई भी वर्ड आमने मीनिंग सेम रहेगा बट चीजों को हम इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करेंगे। So let's just begin. So the title of our chapter is direct and indirect speech, right? What is the direct speech? When we refer to the exact word, जब भी स्पीकर के बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे एक सेंटेंस में, उसको हम क्या बोल देंगे? डायरेक्ट स्पीच बोल देंगे। She said that she can dance. वो डांस कर सकती है. No need to say dance. Dance, right? Rama said that I must complete the assignment. कि रमा ने कहा कि मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना चाहिए. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? देखिए बिल्कुल क्या होता है, यहाँ पे जो आइडिया है स्पीकर का, राइट, स्पीकर के वर्ड्स जो है इट इज रिपोर्टेड बाय अनदर पर्सन, दूसरे लोग वो बातों को बताते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स दे आर नॉट कोटेड। और एग्जैक्ट वर्ड्स बिल्कुल आप किसी की बात को चार बातें लगा के घुमा के बोलना, किसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि शी सेड दैट शी कुड नॉट डांस, वो डांस नहीं कर सकती हैं, और शी कुड डांस, राइट। नाउ रमा सेड दैट शी हैज टू कंप्लीट द असाइनमेंट, उसको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। रमा ने कहा है उसको अपना काम कंप्लीट करना है। हमारी पड़ोस वाली आंटियां दे यूजुअली डूज ऑल दीज काइंड ऑफ। आपकी मम्मी ने कहा है कि आपका बेटा बाहर घूम रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज इनडायरेक्ट समथिंग जो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड हमारी मम्मी के नहीं है, बट दे यूज टू फ्रेम 2-3 सेंटेंसेस कि बच्चा डर जाए। Similarly, this is a very good example to understand what is direct and what is indirect. Next is when the exact words of the speaker they are produced, तो entire speech it is put within the inverted commas. जब हमारी मम्मी स्पेसिफिकली हमें कह दे प्लीज डू योर होमवर्क, या फिर हमको डांट दे, तो वो एग्जैक्ट वर्ड में डांटेंगे। बट अगर किसी हम दोस्त को बोल रहे हैं, या फिर स्पेशली पड़ोसियों वाली जो लेडीज रहती हैं, दे यूज टू बी लाइक आपकी मम्मी ये बोल रही थी, ऐसा करो ऐसा करो। सो दैट वाज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट, राइट। कॉमर्स में इन दिस स्पीच को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। द वर्ब सेड विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, और जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब्स यूज होती है उनको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब्स जैसे कि आस्क्ड, टोल्ड, विश्ड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, informed, replied, exclaimed, inquired, all these. Now, what are the rules for changing direct to indirect में पहुंचने के लिए क्या rules हैं? Please make sure that you all have to learn these rules by heart. Not learn. Over here, learn means रट्टा नहीं है. You have to write it and then keep revising it. Try to frame sentences on behalf of this, and this way you will definitely remember. Because learning all these rules by heart will not give you a command over this topic. Similarly for the active and passive. राइट। सो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो टेंस जो है वो किस में हो जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच में। इट विल नॉट बी चेंज। जैसे कि द बॉय सेज दैट विराट इज अ गुड बैट्समैन, विराट जो एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और टेंस रिपोर्टेड स्पीच में है, देन दे विल बी ऑल्सो चेंज टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि लेट अस डिस्कस दिस रूल इन डिटेल। हम डिटेल में इस रूल को डिस्कस करते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। ही सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज जाता हूँ। ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस इट विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। नॉर्मल बात चल रही है, ही सेड दैट आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। बिल्कुल नॉर्मल बात हो रही है, ये एम का वॉज हो गया। Present perfect will change into the past perfect. He said that I have gone to school yesterday. He said that he had gone to the school yesterday. School से पहले दा नहीं आएगा. This is wrong. क्यों? क्योंकि school is a common noun. Simple past tense, past perfect में हो जाएगा change. जैसे कि he said that I went to school every day. He said that he had gone to school every day. वो हर रोज स्कूल जाया करता है। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इट विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट आई हैव गॉन टू स्कूल एवरी डे, ही सेड दैट आई हैड गॉन, मैं गया था। ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल एवरी डे, वो जाया करता है। पास्ट कंटिन्यूअस में इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे ही सेड दैट आई वाज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज जाया करता था। ही सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे, वो जाया करता, he had been, वो जाया करता था, right? May will change into might and can will change into could, right? He said that I may go to London. We all know London, that is UK, or you can say Britain, right? और यहाँ पे क्या चलता है? Pound. Several times I have told you. He said that he might go to London. Please make sure that you will, that at least you learn your capital and states, and of course the Asian countries के सारे capital currencies आप लोगों को पता होने चाहिए, because this is a very common topic that you should all be aware, because it will come everywhere
whether we are studying science, whether we are studying Hindi, English, whatever, this will definitely come, and it's very good that you learn the capitals, the currencies of each Asian states, right? Especially European countries. This is a European country, that is London. They said that we can bring the cake. वो केक ला सकते हैं. They said that they could bring the cake. वो केक को ला सकते हैं. देखिए दोनों का मतलब सेम है, बट कैन का क्या हो गया है, could हो गया है. Shall will basically it will change into would. He said that I will take a bus to your house. कि मैं जो हूँ आपके घर तक बस को लेकर जाऊंगा. He said that he would take a bus to my house. वो मेरे को बस तक लेकर जाएगा. Must will change into had to. She said that you must take the responsibility of your own life. आप अपनी लाइफ की खुद से responsibility लीजिए. She said that I had to take the responsibility of my own life. Next is you have to keep a note. अगर reported speech जो है, if the reported speech it express a universal truth, अगर वो एक universal truth को express कर दे या फिर habitual fact को कर दे, express कर दे, तो उसका tense है it will remain unchanged, right? रिपोर्टेड स्पीच हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ होती है. जैसे कि टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. देखिए ये क्या है, एच साइलेंट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये. रिपोर्टेड स्पीच एक हैबिचुअल फैक्ट हो सकती है, जैसे कि प्रगति सेड दैट फादर्स रीड्स अ लॉट ऑफ ट्रैवल बुक्स. मेरे पापा जो हैं वो ट्रैवल बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं. प्रगति सेड दैट माय फादर रीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरी, लॉट ऑफ ट्रैवल बुक्स. नेक्स्ट इज इफ द रिपोर्टेड स्पीच इट describes a state of affair which will exist when the speech is reported. अगर वो reported होगी तो उसका जो tense है it will remain unchanged. कैसे? The reported speech makes a sentence which remains true but when the speech is reported. जैसे कि पवन said that granny जो है वो keep complaining about the aches and pain. एक क्या होता है, दर्द. जब कैसे कहीं पे भी दर्द हो जाए, जोड़ों में दर्द हो जाए या फिर आपके शोल्डर्स में हो जाए, पेट में हो जाए. Pawan said that granny keeps complaining of aches and pains, right? देखिए ये क्या है? This is a conjunction which joins two words, right? Situation continues to be same if the speech is reported. He said that Shrikant does not go along with his managing director के साथ नहीं चलता है. He said that Shrikant does not get along with his managing director. Next is if the reported speech के अंदर एक time clause आ जाता है तो उसका tense जो है वो unchanged होता है और जो main verb है एक सेंटेंस की आइदर रिमेन अनचेंज एंड इट विल बिकम पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. कैसे? आशीष सेड दैट व्हेन वी आर लिविंग इन दिल्ली, जब हम दिल्ली में रह रहे थे हम ऑफन समय को देखा करते थे. आशीष सेड दैट व्हेन दे वर लिविंग इन दिल्ली दे ऑफन saw samaya. Okay, or you can say Ashish said when they were living in Delhi they had often seen samya, right? नेक्स्ट इज हियर व्हेन वी आर लिविंग इन दिल्ली, वो क्या है, इट इज द टाइम क्लॉज. टाइम क्लॉज की बात कर रहे हैं और साम्या को हम मेन क्लॉज बता रहे हैं क्योंकि हम साम्या को बार बार देखते हैं, राइट? नाउ व्हाट आर द चेंज इन प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स? वी ऑल नो एडजेक्टिव्स that qualifies noun and pronoun, that tells the quality of noun and pronoun. And what does you mean by pronoun? Means that is used in place of nouns in order to avoid the repetition of nouns. अब देखिए क्या है. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, वी, ही, शी, इट, दे. ये सब. पॉजेसिव क्या होते हैं? हिज, हर, माय, योर. अंडरगो चेंजेस, इनमें चेंज कब आते हैं? व्हाइल रिपोर्टिंग इट इज इन डायरेक्ट स्पीच. जैसे कि pronoun and possessive adjectives of the first person they are changed according to the subject. जैसे कि I said that I want to consult my superiors, को मैं consult करना चाहता हूँ. देखिए I person है, ये भी I person है और ये भी I person. उसके बारे में बात कर रहे हैं. I said that I wanted to consult my superiors. You said I want to consult my superior. आपने कहा कि आप अपने superior से ही consult करना चाहते हैं. ये second person हो गया और ये my क्या है? Your superior है. देखिए I की जगह you लग चुका है. और देखिए she said that I want to consult my superiors, right? So this is the second person है. I is again she में and my is her में, क्योंकि लड़की की बात हो रही है. तो प्रोनाउंस और जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, इफ द सेकंड पर्सन दे आर चेंज देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. जैसे कि मोहित सेड टू मी, मोहित ने कहा दैट योर कजिन्स आर वेटिंग फॉर यू इन द लॉबी, में आपके कजिन्स वेट कर रहे हैं. देखिए मी है आई, मतलब आई मीन्स बोले तो फर्स्ट पर्सन, योर सेकंड पर्सन एंड यू इज सेकंड पर्सन. मेरे लिए आप सेकंड पर्सन है, आपके लिए मैं सेकंड पर्सन. Mohit told me that my cousins, they were waiting for me in the lobby. Next is Mohit said to you that your cousins are waiting for you in the lobby. अब आप देखिए you, your and ये सब क्या है? सेकंड है. अब नेक्स्ट देखिए Mohit said to me that your cousins are waiting for you in the lobby.
This is the second person. And again, Mohit said that his cousins, they are waiting for him in the lobby. Next is pronouns and possessive adjectives of the third person, it will remain unchanged. जैसे कि you said that he enjoys water sports. हम दोनों बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये बहुत enjoy करता है. This is the third person. You said that he enjoys the water sports. I said she has given her resignation. मैंने बोला वो अपना resignation दी. So this is the third person. I said that she has given her resignation. Next is indirect speech में जो pronouns और possessive adjectives होते हैं, first person will change according to the person of this object, right? Second person will change according to the object, and third person it will not change. Next is what are the expressions of time and place in the indirect speech? देखिए, when we change the direct into indirect, जब हम direct को indirect में change करते हैं तो expression जो होते हैं in nearby जो होते हैं, they are changed into the denoting distance. This change is made if the reporting verb is in the past tense में होता है. जैसे कि adverb of time, adverb we all know that tells the quality of work. जैसे कि now का then हो जाएगा, ago का before हो जाएगा, today का that day हो जाएगा, tonight का आज का दिन, that night, tomorrow then very next day, or you can say the following day. Yesterday means the day before, or you can say the previous. Last year means the previous year, or you can say the year before. And last night means the previous night, or you can say night before. Next is next day, मतलब आने वाला दिन, following day. Next Monday, the following Monday. This morning, that morning, right? Adverb of place, here का there, or here there in का, here in का there in. This is not there in, it's here in, there in, right? Demonstrative मतलब this or this का that और these का those. ये तो बहुत आसान है. Next is Peter said that we went swimming in the lake yesterday. हम लोग गए थे. तो अब आपको कुछ नहीं करना है. Yesterday को उसने the day before कर दिया, right? और देखिए we went का had gone हो गया है. Similarly, Rubina said that he is returning home today. देखिए today का क्या होता है? That day होता है, and is का क्या हो गया? Was हो गया, और he का he रहेगा. Next is Jyoti said that we shifted to this apartment a month ago. हम एक month पहले ही हो चुके थे. A month ago means a month before, and देखिए we the day हो गया. Next is what are the conversion of statements from direct to indirect? देखिए the reporting verb is usually changed. Reporting verb ही change होती है following by an object. If there is no object, then it was left unchanged, right? अब tenses, pronoun और possessive adjectives जो होते हैं, they denote nearest of time and places, they are changed. जैसे कि according to the rules which has been explained earlier, जैसे कि that is used as a conjunction over here, and we all know conjunction is what joining word. That is why हर sentence के बाद inverted commas को हटा के that लगाया हुआ है. Here are some words that can be used in place of adverb की जगह यूज कर सकते हैं. The form of verbs जो होते हैं, they will change according to the tenses. जैसे कि add का आप देखिए add, admit, answer, argue, assure, explain, deny, reply, remind, remark, point out, promise, object and explain. Next is Kate said to Mary, I'll complete your portrait today. मैं आज आपका portrait complete कर दूंगी. देखिए today का that day हो गया, and I का she हो गया, that she would कर देंगी वो. Sujata said to the vegetable vendor means सब्जी बेचने वाला, the ginger you gave me yesterday turned out to be rotten. वो क्या थी? सड़ गई बिल्कुल, right? अब देखिए यहाँ पे देखिए ये yesterday को क्या बोल रखा है? Previous day, right? And she complained to the vendor. अब ये कॉमा को हटा के preposition लगा दिया that the ginger जो उसने मेरे को दी थी, जिसने दी थी वो कैसी हो गई? सड़ गई. On behalf of this, you have to complete these exercises. Now what are the conversion of statements from indirect to direct में अगर हमें पहुंचना है, when we convert from direct to indirect to direct में आते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? said और say यूज कर सकते नहीं करते हैं. if the reporting verb past tense में है तो हम necessary change भी बताएंगे. if we make necessary changes in pronouns and possessive adjectives में, we change the word indicating the remoteness, that is nearest of time and place, with the corresponding words which is denoting the distance, right? We use inverted commas to mark the exact word of the speaker. जैसे कि Jyoti told Nisha that she has been early for the rehearsals. She was early for the rehearsals. Now Jyoti said to Nisha that you are early to the rehearsals, early for the rehearsals. On behalf of this, you have to complete this exercise. Now, next is what are the conversion of interrogative sentences को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस जो फॉर्म होती है, इट इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म. वर्ब जो होती है, इट इज प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, राइट? और इंटरोगेटिव बेसिकली इट इज प्लेस्ड और यू कैन से ड्रॉप्ड विद द फुल स्टॉप. जैसे कि मैरी आस्क्ड वीनू दैट हाउ मच डिड यू पे फॉर द ट्रिप? ट्रिप के लिए आपने कितना पे किया है?
she asked the Vinu that how much he had paid for the trip. देखिए हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे he आ गया है, right? Next is reporting verb is changed into the verb such as ask, inquire, wondered, suggested, question, demanded, or wanted to know. Could you please be quiet? She said to me to be quiet, right? Next is question with the verb जैसे कि do, does, did. They are changed into the indirect by आप क्या यूज करेंगे whether or if. जैसे कि can you type, she asked if I could type, क्या मैं टाइप कर सकती हूँ. Have you got a computer, he wanted to know whether I had a computer, right? नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या यूज करना है, जैसे कि डू और डिड, तो वर्ड विल कम फर्स्ट व्हिच इज फॉलोड बाय द सब्जेक्ट. जैसे कि he said to Kanika, why don't you learn driving? आप ड्राइविंग क्यों नहीं सीखते हो. he said to Kanika why she didn't learn the driving. नेक्स्ट इज यस और नो क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन टैग के साथ आप ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव एंड हैड, दे आर इंट्रोड्यूस इन द इनडायरेक्ट विद द वर्ड्स लाइक वेदर, जैसे कि वर्ड्स लाइक इंक्वायर्ड एंड सो ऑन. सोनाली सेड इज समथिंग मिसिंग फ्रॉम द कबर्ड, या कबर्ड से कुछ मिस हो रहा है. सोनल सेड इफ समथिंग वाज मिसिंग फ्रॉम द कबर्ड. नेक्स्ट इज ही सेड हैव यू फिनिश्ड ईटिंग, क्या आपने खत्म कर दिया खाना, मतलब खाना खत्म कर दिया. ये खाना खत्म कर दिया मतलब फूड खत्म नहीं कर दिया, क्या आपने अपना डिनर, लंच, वट एवर फूड यू आर हैविंग फिनिश्ड. He asked if I had finished eating, right? Next is Sachin asked to me, are you afraid of heights? I said no. She said me whether I was afraid of heights, and I replied that I was not. Next is the word is no. The word no it is equal in the sentence in the above example. No means I am not, right? Therefore, we have converted I am not into the indirect speech I was not, right? Next is when indirect questions जैसे कि WH words जो होते हैं questions, they are changed into indirect speech. So word order is same as that of the statement. Word का order बिल्कुल same रहेगा and verb will come after the subject. WH word जैसे कि who, whose, whom, right? Which, where, what, when, why, how, all are repeated. जैसे कि I said to him, where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? I asked him where he was going, right? She said to the little boy, where are your parents? She asked the little boy where his parents were. Parents एक नहीं है, right? Question beginning with will or shall, they are changed into indirect by using whether or if. So when there is a change in the sentence to will or shall, they are changed to would and should. जैसे कि he said to me, will you go there? क्या आप वहाँ जाएंगे? He asked me if I would go there. Next is Pratigya said to her, shall we buy a new washing machine? Then he asked her if they should buy a new washing machine. Next is question beginning with can or may, they will be changed into indirect with a change in the tense. जैसे कि अब therefore can or may will be changed into could or should, or you can say would. See, Hina asked to me, can you help me to carry these cartoons upstairs? ये कार्टून वो वाले कार्टून नहीं है, ये कार्टून वो है जो बॉक्सेस होते हैं उसके पेपर बॉक्सेस, और वो आप देखते हैं जिनके अंदर चीजें आती हैं, वरना कार्टून की स्पेलिंग में डबल ओ आता है, राइट? Hina asked me if I could help her to carry these cartoons upstairs. देखिए ये these का दोज हो गया है, right? On behalf of this you have to complete this exercise. Now what are the conversions of interrogative sentences to the direct speech? जैसे कि while converting an interrogative sentence into the direct speech, तो inverted comma और question mark है वो भी ऐड होते हैं. जैसे कि टोनी asked Suzanne where her brother studied, कि आपका भाई कहाँ पे पढ़ के आया है. टोनी said to Suzanne where her brother studied. देखिए inverted commas आ चुके हैं और interrogative आएगा क्योंकि question है, right? The waiter asked us if we have decided what to eat. क्या हम decide कर चुके हैं? The waiter said to us what we decided to eat. On behalf of this, you have to complete this exercise. So that was all about direct and indirect. Please go through all the rules. Try to frame all these sentences. This chapter is quite lengthy, so revise it in parts. पहले आप थोड़ा थोड़ा parts में करिए. This will definitely in studying in the parts, writing in your respective notebooks, revising each day will definitely get you a command over this topic. Bless.